As we all know, our school is going to teach online on YouTube, live classes, through live classes. Now today, as we all know, our school daily gives some online lectures of all the topic, and today I am going to be with class 9th. I am going to teach the chapter Rest and Motion of Kinematics, which is in standard 9. So at first, the question is, what is motion? The first question is, what is motion? So, according to your book, according to the definition of the motion, a body or an object is said to be in motion if it changes its position with respect to time. What is rest? A body or an object is said to be in rest if it does not change its position with respect to time. Suppose, let's take the example of this chair. This chair is here, and this chair did not change its position with respect to time. ये चेयर अपना पोजीशन टाइम के साथ ये अपना पोजीशन चेंज नहीं कर रहा है, तो ये किसमें होगा? रेस्ट में. अब एक चीज है कि रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव वर्ड्स. व्हाट? रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव वर्ड्स. कोई बॉडी एक साथ रेस्ट में भी रह सकता है, एक साथ मोशन में भी रह सकता है. अब नाउ योर क्वेश्चन इज हाउ वी कैन से दैट रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव वर्ड्स. सो सपोज यू आर इन अर्थ. आप अर्थ पे हैं, आप एक आदमी को देख रहे हैं, वो आदमी कहीं बैठा हुआ है, तो व्हाट डू यू ऑब्जर्व अबाउट दिस मैन? आपको क्या लगेगा उस आदमी के बारे में? यू थिंक दैट दिस पर्सन इज इन रेस्ट. आप क्या सोचेंगे कि वो पर्सन रेस्ट में है. तो आपके नजरिए से विथ रिस्पेक्ट टू यू दिस पर्सन इज इन रेस्ट. बट अगर कोई आदमी मून पे चला गया, मून पे जाके उस आदमी को देख रहा है जिसे आप भी देख रहे हैं, तो अर्थ क्या है? अर्थ रोटेट हो रहा है. अर्थ रोटेट हो रहा है, और ड्यू टू द रोटेशन ऑफ द अर्थ उस आदमी को यह लगेगा कि वो जो आदमी जो बैठा हुआ है वो किसमें है? मोशन में. तो thus we can say that rest and motion are relative words. आपके रिस्पेक्ट में वो आदमी किसमें था? रेस्ट में. और कोई दूसरे आदमी जो कि दूसरा प्लैनेट या मून पे जाके उसको देख रहा है, तो उसके रिस्पेक्ट में वो किसमें आ जाएगा? मोशन में. तो now the definition of rest and motion is clear. A body or an object is said to be in rest if it does not change its position with respect to time, while a body or an object is said to be in motion if it changes its position with respect to time. Now let's write the definition of rest and motion. चेहरा ठीक है. This is the definition of rest. Now I am going to tell you something about quantities and type of quantities. There are two type of quantities. The first one is scalar quantity and other one is vector quantity. Now let us understand the scalar and vector. So please listen to me. Scalar quantities are the quantities which have only magnitude. What? Scalar quantities are those quantities which have only magnitude. They have no specific direction. While vector quantities are those quantities which have magnitude as well as direction. Now, write the definition of scalar and vector.
Okay, now please you give some example of scalar quantity. Now I will tell you some example of scalar quantity. Distance, speed, mass, these are the example of scalar quantity. Why? Because अगर मान लो मैंने किसी से पूछा तुम्हारा मास कितना है, तो the person will say my mass is 50 kg. और ये मास और वेट में हमेशा से ये डिफरेंस होता है. एक्चुअली वो जो वेइंग मशीन होता है वो हमारा मास नहीं, वो हमारा वेट नापता है. लेकिन आदमी लोग क्या बोलता है कि मतलब सॉरी वो हमारा मास नापता है, लेकिन आदमी लोग बोलता है कि आपका वेट क्या है. तो अकॉर्डिंग टू फिजिक्स द वेट शुड नॉट बी इन केजी, वेट शुड बी इन न्यूटन. अगर मान लीजिए आपने किसी आदमी से पूछा कि आपका वेट कितना है, तो दैट पर्सन सेज माय वेट इज 50 kg और माय वेट इज 60 kg. So according to physics he is wrong, because your mass will be in kg, your mass is 60 kg, your weight is not 60 kg. Weight is another quantity. Weight is an example of vector quantity, while mass is an example of scalar quantity. Scalar quantity, as you all know, the quantity which have only magnitude but no specific direction. Example are distance, speed, mass, etc. While now we will understand about vector quantity. So vector quantity and scalar quantity are two different terms. Scalar quantity have only magnitude, while vector quantity have magnitude as well as direction. Example of vector quantity are displacement, velocity, etc., etc., weight. These are the example of vector quantity. Now we will understand